Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am Mrs. Alia Jadun from Physics Department of Army Public School and College Fort Road, Rawalpindi. I welcome all my FSC Part 2 Physics students in OSP session 2020. This first week of OSP session, we will take a start with chapter number 16, that is Physics of Solids. Before proceeding further, let me first clear the reason of selecting this chapter to take a start with. This is one of the most simplest and easy chapter from your textbook, having much of the content which you have learned already in geochemistry. So in this understanding phase of new mode of learning, this will be definitely the most suitable chapter to be absorbed, along with getting yourself tuned with OSP guidelines. Our first topic from this chapter is classification of solids. This is given on page number 237 to 240 of your textbook. After going through this topic and carefully watching this video, students will be able to distinguish between the structure of crystalline, glassy amorphous and polymeric solids. All around us we are surrounded by the matter which occupies space and have some mass. Matter is therefore divided into solid, liquid, gases and of course plasma state. इस वक्त जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है वो सॉलिड स्टेट है. सॉलिड स्टेट में एक्चुअली एटम्स या क्लस्टर ऑफ जो एटम्स हैं वो बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अरेंज किए जाते हैं. इसकी वजह से सॉलिड के अंदर कुछ मखसूस किस्म की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि उनकी एक डेफिनेट शेप होती है, उनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है. और ये जो पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, इसकी रीज़न ये होती है कि उनके दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है. और ये पार्टिकल्स कुछ इतने क्लोज पैक्ड होते हैं कि ऑलमोस्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो निग्लिजिबल यानी ना होने के बराबर होती है. और इन तमाम करैक्टरिस्टिक्स की बिना पे सॉलिड्स के अंदर रिजिडिटी जो है वो डेवलप हो जाती है. Now, different solid materials on the basis of these characteristics and properties have specific uses. For example, materials जो हैं they can show hardness, वो brittleness show कर सकते हैं. Brittleness यानी they are firm but they can easily be broken. इसके अलावा ductility यानी their ability to stretch without getting damaged, malleability, ability to deform under pressure एंड कंडक्टिविटी एट्सेट्रा. अब ये जो मटेरियल के यूजेस हैं, अगर हम इनको किसी भी सॉलिड के अंदर ऑब्जर्व करें तो हमें समझ आ जाएगा कि वाई स्टील इज़ अ हार्ड मैटर, लेड क्यों सॉफ्ट होता है, आयरन के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्यों डेवलप होती है और क्यों कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करता है. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, द पर्टिकुलर ऑर्डर एंड बॉन्डिंग ऑफ एटम्स इन अ मटेरियल. Now, on the basis of arrangement of atoms and the characteristics which we have discussed in detail, the solids can be classified into three types: crystals, polycrystalline solids and amorphous solids. Normally, polycrystalline solids come under the heading of crystals as it is the extension of the crystal form. So, the two main categories of classification of solid on the basis of arrangement of atom is crystals and amorphous solids. We are going to discuss all the three categories of solid state in detail one by one. The first one is crystals. जी, तो crystals का नाम लेते ही जहन में स्टनिंग किस्म के ईयररिंग्स, डायमंड रिंग्स या फिर ड्राइंग रूम में पड़े हुए डेलिकेट किस्म के डेकोरेशन पीसेस आते हैं. Well, crystals is actually derived from a Greek word crystallus, जिसका मतलब आइस है. क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने आप को एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में 3 डायमेंशनल नेटवर्क पे अरेंज किए होते हैं. सो वी कैन डिफाइन क्रिस्टल्स एज एन एरे ऑफ एटम्स विच आर पैक्ड टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न. Some of the examples of everyday materials which we encounter as crystals are table salt यानी common salt जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, sugar, sucrose, snowflakes, quartz, ruby, diamond, etc. Now look at the figure on your screen. You can see in this figure that how atoms are arranged in a crystals. There are 4 types of crystals: covalent crystals,
ionic bond crystals, metallic bond crystals, or molecular crystals. Now the type of atoms and the arrangement of the bonds that will dictate that which type of crystal is formed. Okay. Now the characteristics or the properties of the crystals. The first one is long range order. लॉन्ग रेंज ऑर्डर से हमारी मुराद ये है कि ये जो रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है ये अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट करेगा ओवर द एंटायर क्रिस्टल। फिर इसके अलावा क्रिस्टल्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी ये एकदम से सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। जैसे आइस है, आइस ऑलवेज मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड ये एक फिक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पर होगी। इसके अलावा जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं वो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब एनाइसोट्रॉपिक आपने केमिस्ट्री में बहुत दफ़ा स्टडी किया होगा। दिस इज़ एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एक्सिबिट वेरिएशन इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग डिफरेंट मॉलिक्यूलर एक्सिस। जैसे डायमंड है, डायमंड इज एन ऑप्टिकली एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल दैट इज ट्रांसपेरेंट टू ओपेक। देन कम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिस्टल्स के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल डायमंड को अगर हम ले लें तो डिफरेंट डायरेक्शंस विल गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एंड वी कैन इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय कटिंग डिफरेंट एजेस ऑफ डायमंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो refractive index is the characteristic of any material on the basis of which basically when light is incident on that object, so how much light in which direction does it absorbs, on the basis of that the material shines and give off colors. तो crystals के अंदर हमारे पास different directions में variation होती है refractive index की, ठीक है। Next comes cleavage. Cleavage means how it breaks when put under stress. यानी अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्रिस्टल्स को कट करते हैं विद द नाइफ या ब्रेक डाउन कर देते हैं बाय एनी मीन्स इनटू स्मॉल पीसेस, तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज दैट ईच पीस विल हैव अ क्लीन एंड स्मूथ surface. So this means crystals are having clean cleavage. Crystals are also known as true solids. Now we are going to discuss about polycrystalline solids. Poly is a Greek word which means many. Polycrystalline solids are more or less solid materials with a structure which is intermediate between order and disorder. It is a lump of metal or ceramic and is made up of millions of individual crystals, many crystals, okay, which we call grains by the method which is known as polymerization. Polymerization is a process in which relatively simple molecules are combined into massive long chain molecules or three-dimensional structure by some chemical reactions. These small crystals, which we are calling grains, they can be thought of a single crystal of an irregular shape. So, we can say that polycrystallines are built from multiple single crystals with their corresponding crystallographic planes which is misaligned with respect to each other at random degrees. Okay, since these crystals or the grains are oriented haphazardly, so a polycrystalline material is isotropic in nature, that is, it exhibits the same properties in all the direction. Some of the common examples of polycrystalline materials are like all common metals, ceramics, rock, ice, etc. State bodies without a three-dimensional periodic order of its constituent particles are called amorphous solids. Amorphous solids are also known as non-crystalline solid. It is composed of randomly oriented atoms, ions, molecules, and because of their random arrangement, they do not form any definite pattern or lattice structure. Now let us study the properties of amorphous solid one by one. The first one is the arrangement of constituent particle is haphazard. They are not organized. They are in disorder. Number two is in amorphous solids, the particles are arranged in a regular manner up to a very limited or a small region only. So that is why they are having a short range order. Amorphous solids जो हैं, they don't have a definite melting point.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चारकोल को हीटअप करना शुरू कर देंगे तो जो इसका ट्रांजिशन फेज़ होगा, यानी ये किस टेम्परेचर के ऊपर एग्जैक्टली अपनी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में मेल्ट होगा, वो डिफ़ाइन नहीं होता. इट स्प्रेड्स ओवर 3 to 4 degrees ऑफ द टेम्परेचर, सो इट इज़ नॉट हैविंग द फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट. Amorphous solids are isotropic in nature, that is, they obey the same physical, chemical or optical properties in all the directions. Amorphous solids जो हैं, they don't have fixed heat of fusion because of the absence of the sharp melting point. अब अगर amorphous solid के हम cleavage को स्टडी करें तो we will see that it just breaks into uneven parts with the direct edges. its edges are not you can say leveled, वो बल्कि बड़े रफ किस्म के surfaces में cut down होता है. Amorphous solids जो हैं they are not true solids, they are also known as super cool liquids. Some liquids, when they are cooled, they become more and more viscous and then rigid. Then they retain their random atom characteristic distribution. So that state is known as undercooled liquid, and we call them amorphous solids. Some of the metals may be prepared in amorphous solid formed by the rapid cooling from their molten state. कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स amorphous solid में हैं, ग्लास है, रबर है, पॉलीमर्स हैं, दे ऑल आर amorphous solids. amorphous solids हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूज़फुल हैं. जैसे amorphous solids में ग्लास या प्लास्टिक हैं तो दे आर वेरी यूज़फुल एंड आर वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन, हाउसवेयर, लेबॉरेटरी वेयर एट्सेट्रा. One of the very important, or you can say useful, amorphous solid is silica. It is one of the best material for converting sunlight into electricity. Amorphous solids में रबर भी हमारे पास आते हैं and they are used in making tie, shoe soles, etc. Students, let us quickly wrap up the topic which we have discussed today. We have studied the classification of solid into 3 categories on the basis of arrangement of atoms. These are crystals, polycrystals, and amorphous solids. In case of crystals, we have well-defined order structure, whereas polycrystals, the structure is intermediate between order and disorder, and in case of amorphous, the structure is not ordered. Crystals do have sharp melting points, whereas polycrystals may have sharp melting point, but amorphous solids do not have sharp melting point. The crystals have a long range order, whereas polycrystal and amorphous crystal both have short range order. In case of crystals, we are having a fixed value of heat of fusion, whereas in polycrystals, they may or may not have fixed value of heat of fusion, and in amorphous solids, they do not have fixed heat of fusion. The nature of crystal is anisotropic, whereas polycrystals and amorphous both exhibit isotropic properties. In crystals, we get clean cleavage on breaking, whereas polycrystals do not have clean cleavage and amorphous solids have rough cleavage. I hope this classification of solid state of matter is well clear to all of you. If you have any question, you can contact us on our WhatsApp group number. Stay blessed. Take care. Allah Hafiz.